Welcome to Shamsa Classes Bhubaneswar. I am Mr. Pravir Kumar Patnaik, Department of English. Today I would like to teach you a poem, The Ballad of Father Gilligan. The Ballad of Father Gilligan. What is a ballad now? The Ballad of Father Gilligan is a ballad. What is ballad? Ballad is a narrative poem, usually sung with a regular short stanzas to tell that story. Okay, you see, it's written by William Butler. In short it is named as W.B. Yeats. W.B. Yeats was born in 1865 and died in 1939. He is an Irish poet, dramatist and mystic. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. Okay, you see, this poem, The Ballad of Father Gilligan, and here is the ballad form, and the poet narrates profoundly the meaningful story, and it has more overtly religious content than most of his poems. The story is about a priest who, being emotionally and physically worn out, fell into deep slumber, meaning deep sleep. As the story is now going on regarding the religious thought, and here God's presence is obvious. The story is about the priest therefore now, and when the priest woke up from his sleep, he was horrified the fact that he couldn't make it beside the sick man before he died, and no one had performed the rites of blessing for the dying. At that moment, the divine presence in the guise of the priest is an affirmation and loving and a kind God. What it is? आमे माने जानिचे भगवान सबले भक्त को सहयोग करती। कथारे अछि भगवान ठारू भक्त बहुत बड़। जोटी भक्त दुर्बल हो जाए, हारी जाए बा दुख करे बा सेतबेले निज आउ गोटे सहायता मागे, सेतबेले भगवान स्वर्गर ताको हाथ बढ़ाई थांती इन द गाइज फॉर्म, अदृष्ट शक्ति हिसाब रे आस्थांती, छद्मवेश रे आस्थांती, डुप्लिकेट फॉर्म रे आस्थांती। जयदेवंकर कथा हम ओडिसा रे अछि। गीत गोविंद तम माने काहट सुनिथिबो। जयदेवंक लिखित गीत गोविंद श्रीकृष्ण चरणामृत भाषा। आज जितेबाला जयदेव लिखुंट तांकर गोटे पद तांकर मने पड़ा ना, सीटी से भावलार लेखनी थोईदे तालपत्र पोथी उपरे। गाधोई गले, बाहर को गले, खाइबा पीवा को प्रस्तुत होउछंती, सेतेबेले जयदेवंक रूप में श्री जगन्नाथ स्वयं आसी से गैपटा को जो अच्छी सीटा फिलअप कर दे पलैले। जगन्नाथंकर निजर लेखा परवर्ती मुहूर्त जितेबाला जयदेव देखा पहले ए डैशटा फिलअप हो जाए, आश्चर्य हो गले, किए से करिछि, ईश्वर छड़ा आउ कहीं नुहे, ये कार्य आउ कहार नुहे, ही इज इन द गाइज फॉर्म ऑफ मी एंड केम हियर टू फिल द ब्लैंक्स। तेणु यही समय आसे, असुविधा समय तले पड़े, भक्त को भगवान स्वयं निजे अवतार नियंती एठी मनुष्य रूप में एवं ताकू सहयोग करती। ठीक सेमती आम आज आउ गोटे यही गोटे पोएमटे पढ़ा, कविताटे पढ़ा, W.B. Yeats. इट इज अ रिलीजियस पोएम, रिलीजियस थॉट्स आर डिपिक्टेड हियर, यू सी। ओके, लेट अस कम टू द टॉपिक. The old priest Peter Gilligan was weary night and day. Peter Gilligan was weary night and day. Old priest Peter Gilligan, the name of the priest was Peter Gilligan. He is the father of the church. His work is to devote himself to blessings, the rites of a blessing, to perform the rites of a blessings to the dying people. He was weary night and day. Weary means here completely tired, completely exhausted, physically and mentally. For half his flock were in beds or under green shirts lay. Because more than half of the people were in bed, in the sick bed, and perhaps others are under green shirts lay, where they are under the grave.
अंडर द ग्रेव गुड़े रोग सज्जार पड़ते आउ गुड़े लोक मृत्युवरण कर सारी से कवर दि जापर माटी चढ़ी जाए ग्रेव उपरे एवं घास उठी जाए ग्रीन शॉर्ट्स ले से नाइट एंड डे ही इज फिजिकली ओर्न आउट मेंटली ओर्न आउट संपूर्ण भाव से दुर्बल हो पड़ते अवश हो पड़ते भांगी पड़ते फिजिकल पेन कष्ट होपर से कौन होगा वंस while he nodded on a chair at the month hour of eve तेणु दिने कौन होइछि से फिजिकली टायर्ड है कि संध्या समय रे गोटे चेयर उपरे टिके विश्राम नहीं पड़छंती अल्प समय पे टिके विश्राम नहीं पड़छंती टिके समय पे at the month hour of the eve month means the small winged insects move here and there 2 times a day at the dawns and at the dawn at the dusk at the dawn before sunset and before sunrise before sunset just sunset touch करछि किंबा संध्या समय रे सूर्य अस्त होबाकू जाउछंदी से समय से करछि मथ आवर एंड आउ केते बेले ना सूर्यर जस्ट उदय पूर्व मथ आवर ट्वाइस the month hour of the day month hour of eve means evening another poor man sent for him and he began to grieve से समय अवसर टिके नौछंती विश्राम टिके नौछंती गोटे लोक आसला कहला फादर आसंतु से लोकटी मरीजिवो ताको टिके आपण अटेंड करिवे ताको टिके आसंतु राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टिके देई के आसीबे हठात चेयर ऊपर बसी पड़छंती हठात जने आछे नो सुनर डिड ही सिट देन a poor man came and called in for him immediately बसी कि ना पाद माने सीट रे ता ऊपर चौकी ऊपर से जस्ट बसवा को जाउतन टिके समय पे हठात के आसिक से ताको डाकी पकईची जे फादर आसंतु से लोकटा मरिया को जाउची आपन टिके ताको राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कर दे के आसीबे एक कथा जो भाभी शुणी देती से तलू कहते फिजिकाली पेन होती ओ I have no rest, nor joy, nor peace. People die and die. ओहो कौन करी मोर टिके विश्राम ना मोर टिके आनंद ना मोर टिके शांति ना कौन करी खाली लोक मैंने मरुंट कौन करी एति कथा जीभर बाहरी पड़ी कारण अवश होकी फिजिकली टायर्ड होकी फिजिकली एक्सॉस्टेड होकी से कथा पाटर बाहरी आसी दुखरे आउ कष्ट आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पीक नॉट आई संगे संगे मन भीतर को आउरी चिंताधारा पशि गले भगवान कौन कहली मु कि भूल कथा कहली मत क्षमा करंतु प्रभु मत क्षमा करंतु प्रभु मु एक कथा कहनी मो बॉडी परमिट करूनी मते माय बॉडी कुडंट परमिट मी बट नॉट आई इट इज नॉट फ्रॉम माय इनर बीइंग मो मन भीतर एक कथा मु कहूनी मो हृदय भीतर एक कथा कहूनी मो शरीर एक कथा कहूची आई एम फिजिकली वर्न आउट बट नॉट फिजिकली वर्न आउट बट नॉट मेंटाली मो मन भीतर एक कथा मुझे कहनी हे प्रभु मत क्षमा कर दियो प्रभु ए क्षमा कर दियो कहीं कहला पिला माने कथा तांकर गोटे मात्र कर्तव्य होछि ब्लेसिंग्स राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स डाइंग पीपल मान को बांटिबा जेतु से कर्तव्य विलीन बाहरी पड़छंती सेटा बहुत कष्ट होइछे बहुत ईश्वर मो उपरे कृपा करेंगे ना यही कथाटी भावी ता मन भीतर गभीर दुख होती आफ्टर ही केड गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पीक नॉट आई मो बॉडी माय बॉडी कुडंट परमिट मी बट नॉट फ्रॉम माय इनर बीइंग ही knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep अंठू माड़ी की बसी पड़े से प्रेयर कले हे प्रभु मु कौन कली नीलिंग एंड लीनिंग आंठू माड़ी बसी पड़े एवं लीनिंग करी पकेले आउजी पड़े चेयर को आउजी पड़ी प्रेड कले प्रार्थना कले प्रभु मते क्षमा कर प्रभु मते क्षमा कर मो बॉडी मते परमिट करूनी किंतु मो हृदय कथा कहूनी मो जीवा को चाहूँगी एंड द मथ आवर वेंट फ्रॉम द फील्ड्स एंड स्टार्स बिगान टू पीप से कौन है धीरे 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 मथ आवर टा ए पृथ्वी चली जाइए
रातिर अंधकार घोर माड़ी आसी आकाश रे तारा मन देखा जाइछंती स्टार्स बिगान टू पीप जेते अंधार बढ़िबो सेते तारा देखा जीवो एबे भी दिन बेले हमको तारा दिसे किंतु जेहेतु सूर्यंकर आलोक आमे से गुड़िक मिंजी मिंजी हो जाती से आमको खाली आखिर देखा जाते ना जिते रात्रि अंधकार बढ़ी चलो सेते तारा आमको देखा जीवे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स इन द स्काई वी कैन सी एट दैट मोमेंट व्हेन कंप्लीट डार्कनेस डोमिनेट्स द एंटायर अर्थ they slowly into millions grew and leaves shook in the wind संध्या आसी संध्या सरी धीरे धीरे रात्रि माड़ी आसी रात्रि माड़ी आसला परे से कौन करिसंती से रात्रि माड़ी आसी मथ आवर एंड रात्रि माड़ी आसी से तबले एंड रात्रि तले माड़ी आसी गोटे सेकेंड पिला माने रुहंतु अच्छा देखिबा परवर्ती स्टैंजा कौन देइछि no rest no joy slowly into millions grew and leaves shook in the wind संध्या समय रात्रि सवन कोटी कोटी तारा गोटे 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 हेकि आकाश रे देखा गले एवं लिव्स शुक इन द विंड धीरे 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 वृक्षलता गुड़िकर पवन रे वृक्षलता गुड़िक पत्र गुड़ा हलिबा को लगी ये तो नाइट रो शो and God covered the world with shade and whispered to mankind at that moment the entire world is dominated by darkness God made the darkness and whispered in every man's kind that oh my dear man take rest you are tired now physically and mentally working day and night and you take rest now it is automatic. The entire darkness is regarded as here the blanket made by God, the darkness made by God, and whispered in every man's ear that you should take rest now. तेणु एक कथा कहिसंती ऑटोमेटिक निद होइछि एवं सेतबेले पीटर गिलिगान चेयर पाखरे लीडिंग करिसंती तांको भी संपूर्ण निद होइछि कारण ए पृथ्वी रे आमे समस्ते अच्छे upon the time of a sparrow chirp when the moths came once more मो पिला माने अबे कहितली दुई थर आसंती moths जस्ट संध्या परे परे आसीबे एवं रात्रिर आरंभ पूर्व से माने पुणी चली जिवे पुणी रात्रि सरी जाउथबो से समय आसीबे सकाळ पाइबा पूर्व पहुँचे सूर्य उदय पूर्व पुंत मथ आवार पुणी थरे आउ थरे आसी गले एवं मथ्स आवार केम केतबेले upon the time of a sparrow chirp at dawn sparrows chirp the chirping of a sparrow is the real alarm to wake people up. God made the alarm switch. Oh my man get up आम कि घरे गोटे अलार्म बजे दौचे घंटाटे लगे देचे क्या कहूचे ना अलार्म भाई आमको माँ कि बापा किए उठुंट आम कर्मक्षेत्र को बाहर जाऊे किंतु एठी ये पृथ्वी सारा को ताऊ के नहांती गोटे इंटरनेट लगी से अलार्म इंटरनेट कौन स्पैरो चिर्प जुआड़े जीव संसार सारा नेचुरल अलार्म दैट इज स्पैरो चिर्प व्हेन स्पैरोज चिर्प वी सी एंड वी थिंक दैट it is dawn when the moths came once more पुणी मत्स कौन कर आउ थे सी आसुंच मथ आवार से कान नाक मथ मैंने पशि जाती आम एमती विचलित अवस्था उठी पड़ू अरे आखिटा खोलला कौन हुए से राति पाई जाए द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर व्हाट हैपेंड जो लीनिंग करके से बसी पड़ती आउजिक शोई पड़ती एमती हठात स्पैरो चिर्प कर मथ आसिक नाक कान पाखे गुणगुण होती इमिडिएटली आखि खोली जाइए से अलर्ट हो जाती एंड स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर उपर सीधा से ठिया पड़ते कौन है राति पाईगला ये कथा कर पिला माने कौन पे से पुणी भाभी देखुं कौन मत आवार जो पास कर महाभरन द मैन हैज डाइड कहले ओ लॉर्ड अलास हे भगवान से लोकटा मरी जाइए व्हाइल ही स्लेप्ट ऑन द चेयर
जो चेयर मु शोई से लोकटा मरी जाइए ओफ हे भगवान मु कौन कली कि पाप कली पूरा दुख प्रकाश कर he rose his horse out of its sleep and rode with little care घोड़ा को उठे से ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो किए ना घोड़ा हाथी पशु पक्षी जीवा आसा करते लोक जिते गाड़ी मोटर अभाव से ट्रक मोटरसाइकेल बस स्कूटर स्कूटी एक्टिवा किसी ना से कौन जाऊे ना घोड़ा गाड़ी शगड़ गाड़ी बलद गाड़ी घोड़ा पिठी एमती हठात करी पीटर गिलगान घोड़ा को उठे ओ माय डियर जस्ट गेट अप एंड रोड विथ लिटिल केयर एमती घोड़ सवार कले घोड़ा पर बसी कले विथ लिटिल केयर एकदम बेखातिर करी खाल जिते पहाड़ पर्वत बल मंद कौन सी रास्ता कली स्ट्रेट जमी सर्ट रूट एत घरे मुझे पहुँचबी एकदम सीधा चलिले केम चलले ना विदाउट केयर लिटिल केयर खातिर कले ना से आगू चलले ही रोड नाउ आज ही नेवर रोड बाय रॉकी लेन एंड फेन एमती से कले जाइछंती से तळकु रोड कले बाय रॉकी लेन एंड फेन पथर रास्ता सन्तुसंधिया रास्ता मार्सीलैंड जोटा कि फेन बोली आम कहूचे एंड रॉकी लेन खाल पथर खणा अनमेटाल्ड रोड जिते जो पड़ला स्ट्रेट से चलले कड़ को ना टू द सिकमैन्स हाउस कौन कहले द सिकमैन्स वाइफ ओपन द डोर फादर यू कम अगेन से तुम जाकि कबाट पाखरे से नक कर ठक ठक कर कबाट को मारी sick man's wife came and opened the door and got astonished. Father, you come again? A police question. Father, you come again? What? Father thought, I come again? Means who? I have not come. But who has come here? Father thought this one and astonishment when she told Father, you come again. It is in the astonishment exclamation. Father thought at that moment, what? You see, father thought and dumbfounded, only opened his mouth and speak no word. Just at last he asked, and the poor man, is the poor man dead? आपणकर स्वामी कर देहांत हो यही कथाटी जस्ट से भावुंट पचारुंट पार्टी कथाटा स्पष्ट बाहर ही कुड हार्डली स्पीक बट द वाइफ रिप्लाइड ही डाइड एन आवर अगो ओफ द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गाला इन ग्रीफ स्वेड टू एंड फ्रो से समय ये गोटे पद कथा तले पाठरू बाहरी पड़ी ही डाइड एन आवर एगो कहले ओफ मुखड़ कली पागल भाया से चतुर्पार्श्व बुली गले स्वेड इन ग्रीफ टू एंड फ्रो हे भगवान मु कौन कली कि भूल कली कि भूल कली हे प्रभु मत क्षमा कर कौन हो गला मो जीवन प्रथम डिविएशन इज द फर्स्ट डिविएशन इन माय लाइफ सेठो से वाइफ तार कही when you were gone he turned and died as merry as bird कहले फादर जिते बड़े आपण चली गले से अति आनंद रे अति खुशी रे गोटे पक्षी भरिया धीरे धीरे से उड़ी गले तांका जीवन छाड़ी गला अर्थ ए माटी घट पिंडरू सुनाशक पक्षी उड़ी चलिला माटी घट पिंड छाड़ी सुना सुक पक्षी जीव उड़ी यहाँ थाए ओडियार प्रवाद सुना सुक पक्षी अर्थ जीवन एटा गोटे माटीर घट मनीष शरीर हूँ गोटे माटीर घट माटीर तैयारी होता गोटे पितुला यार मूल्य किसी ना जिते पर्यंत जीवन अच्छी ये अच्छे एक्टिव एत सुंदर शरीर आम देखे होचे जिते जीवन टी चली जाए ये माटी सदृश आपको कहीं पचारती यार मूल्यहीन से हो जाए तेणु से कहले व्हेन यू आर गॉन ही टर्न एंड डाइड एज मेरी एज बर्ड जिते आपड़ पलि गले फादर राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देकी कान से गोटे पक्षी भाया अति आनंद से चली गले दी ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन ही नेल्ट हिम एट दैट वर्ड से आंठू माड़ी बसी पड़े हे भगवान मु कौन कली हे प्रभु कौन कली ताले राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स करिछि मु द
किए करछि राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मो पे ही इज नोन बट गॉड मस्ट हैव सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स टू डू द सेम फॉर मी आउ कहा को नुहे ही हैड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स इन गाइज फॉर्म ऑफ मी मो रूप बदलई मो रूपरे मो पाई भगवान केबे ए काम करछंती ता छड़ा आउ केही नुहे ए कथा को से चिंता करछि जेतबेले चिंता करिछि मो छड़ा आउ के से काम करि पारि नाहंती एंड से टोल्ड कोन करिछि ही टोल्ड ही नेल्ड ही हु हाथ मेड द नाइट ऑफ स्टार्स हु हाथ मेड मीन्स हु हाज मेड हेठू गॉड गोटे ग्रेटिट्यूड से करिछि कृतज्ञता जणाई फादर गिलिगन से ही हु हाथ मेड द नाइट ऑफ स्टार्स एंड सोल हु टायर्ड एंड ब्लीड सेंड वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स डाउन टू हेल्प मी इन माय नीड पीटर गिलिगन थॉट एट दैट मोमेंट he who has created the entire universe who has created life and blood and the soul in our entire world in our body sent one of his great angels in the guise form of me to help me in my need means when I needed to sleep my need means here when I was sleeping मतलब सोई पड़ती अवश्य होइतिली मोर आवश्यकता थिला सोइबा मो फिजिकली टायर्ड हो जाइतिली सेतबेले मते सहयोग करिया पई ही हैज सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स इन द गाइज फॉर्म ऑफ मी ही हु इज wrapped in purple robes with planets in his care जे कि ए विश्व संसार को सृष्टि करछंती ए विश्व को नियंत्रण करछंती ए सृष्टि की तैयारी से करछंती सेही omnipresent omnipotent and omnipotent God almighty God had pity on the least of things asleep upon a chair had pity he is benevolent he is sympathetic with me the least of things कोटी 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 प्राणी ए सृष्टि जन्म होइछंदी तेणु समस्त पई से गोटे गोटे असाइनमेंट करछंदी गोटे लोक गोटे 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 एंजल को से सेट करछंदी तेणु से जानी पारले ए को भक्त मोर सेतबेले किए किछि काम करनी को कंडीशन रे रहिछि ताकू सहयोग करिया पई अर्ची आस्लिप अपने इच्छा तांकर सेही नगण्य जीव भितरु मु गोटिए नगण्य जीव जे कि चेयर ऊपर मु सोई पड़थिली ए अवस्था रे मते सहयोग करिया पई गॉड हैज सेंड वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल्स to help me in the guise form of me हे भगवान आपण केते कृतार्थ मो जीवन हे गला मु आपण केते विराट आमे केबे कहि परबेनी वर्ड्स फेल to show our gratitude to God because we owe our life to him आमे तांकुटु सृष्टि हेचे तांकुटु जन्म नैचे तेनु पिला माने आमे थ्रु अनुभव करिबा जे प्रकृति रे ऑनेस्ट मैन ऑनेस्ट वर्क करे ताकू प्रत्येक मुहूर्त रे भगवान सहयोग करंती प्रत्येक मुहूर्त में भगवान सहयोग करती से कह गोटे प्रोवर्ब अच्छी जे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अर्थ जी ऑनेस्टली काम करे जे प्रकृतर मनीष जे प्रकृतिर भक्त सत् मार्ग रे सत्कर्म रे जे जाए ताको ईश्वर सबले चेष्टा करते एवं आमे स्टूडेंट लाइफ रे टीचर्स माने तुम मानक सब निश्चय कहिथिबे ही हु गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स जे निजर कर्तव्य करे जे निजर सबले सब चेष्टा करे भगवान ता पाखे पाखे थांती भगवान ता पाखे पाखे थांती ए मंदिर मस्जिद जितेबाला रही गिर्जा ये सब थोड़े ठाकुर न था ठाकुर अच्छा आम पाखे ही इज ऑलवेज बिसाइड अस एंड ऑलवेज वाचफुल टू अस से सब आमको देखु था तेणु आमर कर्तव्य आमर कर्म अनुसार से आमको सहयोग करती कि दंड दियंती आदि आम खराब काम करवा दंड पाइबा एवं भल काम करवा आम निश्चित तांको द्वारा प्रशंसित होगा एवं साहाय्य पाइबा कृपा लाभ करवा आम जीवन को आम सरस सुंदर करवा ठीक सेमती पीटर गिलगान गोटे डिवोटेड पर्सन एवं तांकर कर्तव्य से केबे अवहेला करि नांती किंतु फिजिकली ओर्न आउट होइकी फिजिकली एग्जॉस्टेड होइकी फिजिकली टायर्ड होइकी एवं मेंटली टायर्ड होइकी दिने अवश्य नवा समय भगवान तार कार्य करने गोटे देवदूत स्वर्गर से प्रेरित करछंती एवं तांकर कार्यटे को संपादन करछंती हाउ ग्रेट गॉड इज
we can't believe it because we owe our lives to him. भगवान सर्वश्रेष्ठ अलमाइटी पावरफुल ओके ठीक अच्छे तेणु आम नेक्स्ट क्लास रे तार आउ क्वेश्चन आंसर तुमको डिस्कसन करेबा एवं तुम क्वेश्चन आंसर प्रिंटेड मटेरियल्स आम आउ थे तुमको देदेबू ओके ओके हैव ए नाइस डे बाय।